अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है व्हाट इज स्टाइलिस्टिक एंड व्हाट इज द स्कोप एंड नेचर ऑफ स्टाइलिस्टिक। हाँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर यूट्यूबर की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आप लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से इंटरेस्ट रखते हैं और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ लगे घंटे के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आप टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। Stylistic is a systematic way of exploring a literary text, especially the language of a text, and tries to explain how language creates meaning, style, and certain effect. The study of stylistic is considered as one of the significant tools to analyze a literary piece from the point of view of the language. There are a number of scholars who are engaged in interpretation of different genres of literature such as prose, poetry, drama, short stories, and one-act play with the help of stylistics. The interpretation of poetry is possible with the help of some of the important terms in stylistic. The student of literature are to be made aware of the fact that without looking at the individual and collective use of the lexical items, it is not possible to comprehend the meaning of a poem of any sort. जब भी एक लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर राइटर के स्टाइल को पढ़ा जाता है, उसकी यूज़ की हुई लैंग्वेज को पढ़ा जाता है कि किस तरह से ये मीनिंग कन्वे करती है और किस तरह से एक सर्टेन इफेक्ट्स पैदा होते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम है राइटर की यूज़ की हुई लैंग्वेज, उसका स्टाइल, उसकी जो इसने फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ की हुई है, वो सारा जो सिस्टम है उसको स्टाइलिस्टिक कहा जाता है। और स्टाइलिस्टिक एक अहम ज़रिया है कि एक लिटरेरी टेक्स्ट को हम लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज कर सकें, समझ सकें उसको। जब भी एक लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर राइटर के स्टाइल, उसकी यूज़ की हुई लैंग्वेज और इसकी जो लैंग्वेज है वो किस तरह से मीनिंग कन्वे करती है उसके बारे में स्टडी किया जाता है, उसको स्टाइलिस्टिक कहते हैं। सो स्टाइलिस्टिक एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी लिटरेरी पीस को लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। बहुत से स्कॉलर्स हैं जो कि लिटरेचर की डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स होती हैं जैसे कि प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, शॉर्ट एक्ट्स, इनके बारे में स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो स्टाइलिस्टिक के थ्रू ही इंटरप्रिटेट करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ अगर हम किसी पोइम को एनालाइज करते हैं तो हमें लाजमी तौर पे पता होना चाहिए कि उसमें जो फिगरेटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज का क्या रोल है, सिमिलीज, मेटाफोर का क्या रोल है। तो जो ये जितने भी जो टर्म्स हैं वो सारी स्टाइलिस्टिक के अंदर आएंगी। So what is stylistic? It must be made clear that there are the number of definition of stylistic given by many scholars in the field of stylistic. However, the following definitions are vital as they provide us sufficient knowledge to understand the meaning of term stylistic. Important definitions. The general definition of stylistic is that it is study of style of writers or the literary artist. According to Lucas, stylistic is efficient use of language in prose to make statements and arouse emotions. Stylistic can also be defined as the study of different styles that are present in the text or the utterance of character. According to David Crystal, stylistic is study of certain aspects of language variation as a part of linguistics. Stylistic is linguistic approach to literature explaining the relation between the language and its artistic function. H.G. Widdowson says that stylistic involves both literary criticism and linguistics. Stylistic an intensive study of literary texts on an advanced level. Stylistic is the study of linguistic choices the writer makes to express his or her thoughts and feelings in an effective way. Stylistic can also be defined as the study of language deviation or the choices of the language outside of the range of normal language. Stylistic may be defined as the study of language used according to the situation and the circumstances. The above definitions are helpful in understanding the nature of stylistic. The nature and the scope of stylistic. As we know that every individual is known for his or her style, every person in the world possesses some kind of the style suitable for his or her. Similarly, every writer has his or her own style of writing.
It is observed that every writer makes use of linguistic choices to describe the situation, to portray his characters. Therefore, it is interesting to study how the writer make use of certain structures in their writing. Stylistic deal with a wide range of language varieties and style that are possible in creating different texts. There are certain possibilities for the writers to make a selection of the words from a wide range of storehouse of the words such as synonymy, antonymy, homonymy, metonymy, etc. The writer also makes use of the phonological, morphological, syntactical system of the language depending on situations. Stylistic is the distinctive way of use of language. Any prose writer or the poet or the playwright uses his unique method to create a text. The choices of the linguistic unit made by the writer reflect his or her ego and the social cultural aspects on which the character and the situation exist. जैसा कि हम जानते हैं कि हर बंदे का एक अपना स्टाइल होता है, इसी तरह राइटर का भी लिखने का एक अपना स्टाइल होता है। जब भी एक राइटर कोई करैक्टर पोर्ट्रे करता है या फिर एक सिचुएशन बनाता है तो वो अपने स्टाइल में लैंग्वेज को यूज़ करता है, जो कि इसका स्टाइल कहलाती है। इसी तरह एक वर्ड के बहुत से मीनिंग्स होते हैं, तो राइटर को अपनी सिचुएशन के लिहाज से, अपनी चॉइस के लिहाज से वो उन वर्ड्स को चूज़ करने का हक होता है। वो लैंग्वेज को फोनोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, सिंटैक्टिक स्टाइल में यूज़ करता है। सो लैंग्वेज को यूज़ करने का जो मुनफरिद सा ज़रिया है उसको स्टाइलिस्टिक कहा जाता है। हर प्रोस राइटर का या पोइट का, प्ले राइटर का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है जिसमें वो टेक्स्ट को क्रिएट करता है। यानी एक लैंग्वेज को यूज़ करने का हर राइटर का अपना एक स्टाइल होता है जिसपे ना सिर्फ उसकी खुद की पर्सनालिटी बल्कि उसका सोशल और कल्चर बैकग्राउंड भी जाहिर होता है। Why should we do stylistic? To do stylistic is to explore language and more especially to explore creativity in the language use. Doing stylistic thereby enriches our ways of thinking about language, and as observed, exploring language offers us substantial purchases on our understanding of literary texts. Since stylistic is the borderline discipline between the language and literature, it focuses on language use in both literary and non-literary texts. It takes into account many disciplines such as literature, sociology, physiology, philosophy, and so on. Stylistic looks at the style from the following perspectives. स्टाइलिस्टिक क्या होता है कि जब हम लैंग्वेज के थ्रू लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, स्टाइलिस्टिक का यूज़ ना सिर्फ लिटरेचर के अंदर होता है बल्कि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी के अंदर भी स्टाइलिस्टिक का यूज़ किया जाता है। स्टाइलिस्टिक के अंदर हम स्टाइल के कौन कौन से पर्सपेक्टिव को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टाइल एज चॉइस। Style as choice. In this, the writer makes certain choices of the words and expression to describe the situation or the characters. The poet makes use of certain words or the expressions to highlight his or her intensely felt emotions. हर राइटर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करता है। जब भी एक राइटर कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे करता है या सिचुएशन को बिल्ड करता है तो वो स्पेशल जो वर्ड्स हैं उनको चूज़ करेगा। तो हर राइटर का वर्ड्स को चूज़ करने का एक अपना स्टाइल होता है जो कि स्टाइलिस्टिक के अंदर आता है। Second point is style as deviation. Here the poet or writer avoids the standard form of writing and makes use of deviation to sound stylistically significant. In other words, the writer does not conform to standard form of writing. Thus, we can say that the writer has a poetic license to break the rules of grammar. जब भी एक राइटर अपने स्टाइल को यूनिक बनाने के लिए ग्रामर के रूल्स को तोड़ता है और अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने एक स्टाइल को बनाने के लिए वो ग्रामर्स के रूल्स के खिलाफ जाता है तो उसको डेविएशन कहा जाता है, जो कि स्टाइलिस्टिक के कैटेगरी में आती है। राइटर के पास ये इख्तियार होता है कि वो ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको तोड़ के इफेक्टिवनेस पैदा करने के लिए वो अपने स्पेशल अंदाज में लैंग्वेज को यूज़ करता है। Style as situation. Here the situation is the context in which the text come to life. The situation would be social, cultural, political and pragmatic. We come to know that situation in the literary text via the style of the writer. कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट है, चाहे वो ड्रामा है या पोइट्री है, उसमें सिचुएशन बनाई जाती है जिसके
अकॉर्डिंग हम कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट को लिखने के लिए लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है ताकि एक अच्छी सी सिचुएशन बनाई जाए जिसके मुताबिक हम कॉन्टेक्स्ट लिखने के काबिल हों। तो इसके लिए एक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है जो कि स्टाइलिस्टिक के अंदर आती है। Number 4 point is style as temporal phenomena. Here the time factors play an important role. When the writer wants to write a text, he or she has to consider the time factor. For example, Shakespeare wrote the plays and used the language that was relevant to his period. The modern playwrights do not write the same way as Shakespeare did. Therefore, there is a marked difference between the Old English and modern English. एक राइटर के लिखे हुए टेक्स्ट के थ्रू ना सिर्फ हम उसकी पर्सनैलिटी को बल्कि उसके टाइम पीरियड के बारे में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह से शेक्सपियर के प्ले हैं वो मॉडर्न जो राइटर हैं उससे टोटली डिफरेंट है। इसी तरह ओल्ड जो राइटर थे वो मॉडर्न राइटर्स की तरह नहीं लिख सकते। यही वजह है कि हम ओल्ड जो इंग्लिश है उसमें और मॉडर्न इंग्लिश के दरमियान वाज़ेह तौर पर फ़र्क दिखते हैं। Number 5 point is style as individual. It is often said that man is known by his style. Every individual is unique in his style of speech and writing. There are some specific characteristic features associated with the particular individual. हर एक बंदे का अपना एक स्पेशल स्टाइल ऑफ स्पीच होता है, अपना एक स्पेशल स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। There is a tremendous scope of study of stylistic. There are many writers in the world who have written about the direct experiences of their lives. The language style of the writer are worth studying to understand the nature of the linguistic behavior of his or her characters. Individual styles are also worth studying because they give us insight of the circumstances in which the individual moves. The significance of the literary language cannot be avoided. We can appreciate the literary text and try to understand the nature of the language used in the text. The literary texts are better understood with the tool used in the stylistics such as deviation, figure of speech, foregrounding, discourse, etc. Just a study of stylistic paved the way of understand the text at the advanced level, bringing out of the nuances of the language use. स्टाइलिस्टिक का स्कोप दिन ब दिन बढ़ रहा है। बहुत से राइटर ऐसे हैं जो अपनी लाइफ का डायरेक्ट एक्सपीरियंस अपनी राइटिंग के थ्रू दिखाते हैं। स्टाइलिस्टिक के थ्रू हम एक राइटर की लाइफ, उसके सर्कमस्टांसिस, उसका बैकग्राउंड, उनके टाइम पीरियड के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। डेविएशन, फिगर ऑफ स्पीच, फॉरग्राउंडिंग, डिस्कोर्स वगैरह ये सारे स्टाइलिस्टिक की एक इकसाम है, स्टाइलिस्टिक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। स्टाइलिस्टिक के थ्रू ना सिर्फ हम लैंग्वेज को एक एडवांस लेवल पे यूज़ करना सीखते हैं बल्कि हम एक टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना, उसको एनालाइज करना भी सीखते हैं।